breaking news update that we are getting to you live from the national capital. Let's show you the pictures from earlier today. That was outside this particular building. Sameer Sharma is joining us live. Sameer Sharma, the DCP, on the phone line. Mr. Sharma, can you confirm the casualty numbers and what we know so far, sir? Okay, I'm going back to Sameer Sharma. Sameer Sharma is joining us live. The fire broke out in a building near pillar number 544 of the Mundka metro station. Getting in breaking news now as we stay with these pictures. At about 4:40 p.m. a call was received. This is in Mundka regarding the fire in an office. And on receipt of the call, the local police immediately reached the spot near metro pillar number 545, where a four-storied building on plot number 193 had caught fire and put in their best efforts, they claim, to rescue those trapped. Police officials adding that they broke the windows of the building to rescue the inmates and got the injured admitted in the hospital. They claimed at that point that 12 people were admitted in the hospital. This is around 7 p.m. And on preliminary inquiry, what we know so far is that the building is a four-story building used commercially for providing office space to companies, and that the fire incident started from the first floor of the building, which is an office of a CCTV camera and a router manufacturing and assembling company. Over 50 employees or workers of the company were reportedly rescued, and so far 26 bodies have been recovered. Those are live pictures on the right of your screen of what remains of that building. That's a live picture, live shot from the national capital. Over 35 tenders of the fire brigade were pressed into service to control the fire. Ambulance facility is also made available at the spot to provide immediate medical assistance to the rescued victims. That was the latest press release that came in from the DCP of Outer District, Sameer Sharma. And let's cut across live also to Republic Bharat, where there's a reporter on the ground covering the incident. And the moment we have the reporter live, we're going to cut across to Republic Bharat. But what we know so far, and there are some reactions also coming in. Some reactions also coming in via news agency ANI. And let's play those reactions out of eyewitnesses as well. Eyewitnesses who saw what happened and who are witness to the rescue operations. We are hearing that 24 to 26 fire tenders were pressed into service. Some of them are still there at the location. We have the fire officer on record. Let's play that out. आया था 20 के करीब 20-25 लोग हैं, लेकिन 26 लोग तो निकल चुके हैं। तो अभी और देखते हैं कितने। तो यहाँ पर किस तरीके का सामान था जिस पर इससे आग इतनी ज़्यादा फैल गई? ये सीसीटीवी का गोडाउन था और उसी का ऑफिस था। उसी से पूरी बिल्डिंग में सर या फिर पूरी बिल्डिंग? महिलाएं भी थी सर इसमें जो रेस्क्यू हुई? हाँ, कुछ महिलाएं भी हैं। सर रिहाइश भी बताई जा रही है टॉप फ्लोर पर यहाँ कुछ लोग? ये अभी नहीं पता लग पाया। जो मालिक है वो यहाँ पे है नहीं। की ऑपरेशन जारी है। अभी हमें लोगों के हिसाब से लगता है कुछ लोग हो रहे हैं, तो उनके लिए हम रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और पूलिंग करने के बाद हम लोग अंदर घुस के और 26 लोगों को हॉस्पिटल भेज चुके हैं। कैजुअलिटी कितनी अभी तक रिपोर्टेड हो चुकी है? ये हॉस्पिटल बताएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या कंडीशन है। हमें जो मिला हमने उनको हॉस्पिटल भेज दिया। रेस्क्यू अभी तक कितने हो पाए? रेस्क्यू भी चल रहा है, टाइम लगेगा, काफ़ी बड़ा एरिया। अभी कितना टाइम लग सकता है पूरे ऑपरेशन? ये अभी नहीं बता सकते। Ananya joining me live. Let me go across to Ananya joining me live from the spot. Ananya, Ananya has been reporting from there since this evening. Going across to Ananya. Ananya, what do we know so far? Well, yes,
well, as Niranjan, as per the official statement from DCP Outer, what we know so far is that a total of 26 fire tenders have been pushed into this incident. More than 20 dead bodies have been recovered from the spot. In fact, and 12 to 14 people have been injured into this whole incident. The fire broke out at a CCTV office. It started from the first floor. इस तरीके से ये जो धुएं का गुबार है, ये आप देखते हैं पिक्चर से साफ दिखाने का साफ दिखा सकता है कि किस तरीके से अभी भी कहीं ना कहीं जो फायर कर्मी है लगातार कड़ी मशक्कत कर रहे हैं ताकि इस पर आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन अभी तक फिलहाल आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया। लगभग 30 गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार लगभग 4:45 बजे की जानकारी थी। 4:45 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद लगातार घंटों की मशक्कत के बाद अभी भी आग पर काबू पाने के लिए लगातार दमकल कर्मी कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। मैं देखिए मेरे पीछे यही वो बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो लगातार धुएं का गुबार निकला है। देखिए यहाँ पर अभी भी लगातार आग का काम जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। फिलहाल अभी की जो हालिया जानकारी है, लगभग 26 लोगों की जो शव है वो बरामद किया गया है, जिनको नजदीक के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहां पर जिनका पोस्टमार्टम है। आप ये देख सकते हैं लगातार लोग दमकल की गाड़ियां लगातार आग बुझाने की कवायद में जुटी हुई है ताकि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आग लगने के बाद यहाँ की जो लाइट है उसको भी काट दिया गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी काफी दिक्कत परेशानी आ रही है लगातार, क्योंकि अंधेरा है और अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन कर पाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल भी हो पा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फायर कर्मियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर, और मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को नजदीक से थोड़ा सा दिखाए ताकि ये देखिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो पुलिस फोर्स है, दमकल के कर्मी हैं, लगातार वो अपनी तरफ से पूरी मशक्कत कर रहे हैं। लेकिन वही मैं कहूँगा बार करीब घंटों के बाद अभी भी लगातार आग पर काबू पाया नहीं गया है। आग पर काबू जरूर है, लेकिन कूलिंग का काम जरूर जारी है, क्योंकि रुक करके यहाँ पर आग लग रही है, रुक करके सारे बार रुक करके ये घटना हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना हंसराज हंस बीजेपी एमपी जॉइनिंग अस ऑन द फोन लाइन। हंसराज हंस, इस ये जो फायर हुई है इसके बारे में हमें क्या पता है और आपके पास क्या डिटेल्स है अभी जी देखो, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत दर्दनाक ट्रेजेडी हुई है। 20 से ज्यादा लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 100-125 लोग लगे हुए हैं, अमला फैला सब कि इसको रेस्क्यू की जाए, जल्दी से जल्दी निकाला जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें बाद में हम जगते हैं, पहले जो डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने एनओसी वगैरह देनी होती है, और इतनी हीट है, उसकी वायरिंग से लेके सारा टेक्निकली अपडेट्स करते रहना चाहिए। जो बिल्डिंग का मालिक है या जो भी चलाता है इसको, यानी बहुत 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 ज्यादा नालायकी है। हाँ जी, थैंक यू हंसराज हंसी, थैंक यू बात करने के लिए हमारे साथ। अनन्या हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो लाइव है हमारे साथ। मैं जाना चाहता हूँ उनके पास। अनन्या, टेक अस थ्रू the situation there. You were reporting from there earlier. What were you told earlier? What was the situation on the ground? How did it start? And what do we know about the incident itself? Well, yes, at around 4:45 when the whole incident had begun, what we have seen was that the fire was into small quarters. But then the fire departments were doing intensive efforts in order to douse up this fire, and 20 fire tenders, in fact, Niranjan, were pushed into this whole incident. And still now the increase has been there in the number of vehicles that are here. The more than 30 fire tenders, because by the time at around 8 p.m. there were only 9 fire tenders which were trying to douse up this fire, and it was said by the fire officials that it's under control. But then, due to the heat and due to the temperature that are here, the fire is recurring, the fire is continuously going up again and again, and which is becoming a very big problem for the fire department officials. I'll ask my camera person Parvez to show you the smoke that is coming out from this whole building.
where this fire had broken out. Remember, it is a 3-story building where this whole fire had broken out. It's a commercial complex of 3 stories, and it was basically rented to various offices and office spaces. And this is the major reason why this fire would have engulfed, because there would have been a lot of wooden material, a lot of chemicals as well. This might have caused given a rise to the fire itself. And you can see the visuals around here. You can see the fire officials. You can see the ambulances which are here in order to rescue people, in order to control this whole situation that has been created. But what is the bigger question that arises is whether there was a fire NOC, because the owner of this whole complex has been arrested by the Delhi police and is currently in the police custody of the Delhi police. The Delhi police is also doing an impact survey as to how much of damage has been done. You can see around me are the civil defense volunteers as well, who are here to assist in the rescue operation. Delhi police teams on the spot, ambulances on the spot, in fact. And this is the building from where this whole fire had begun, and we can see that in fact the NFSC's officers are also here, the National Fire Services are also here, the fire department, the experts in various kinds of fire. You can see these fire tenders are continuously working around to pull out the people or any kind of living beings who were there. The human skeletons would be put out, the human bodies would be taken out by the teams of Delhi police. The teams of fire officials are here on the spot, trying to assess the situation, trying to in fact take down whatever they can and to recover. Ananya, tell us more about the building. Ananya.